Namaste and welcome everyone to my channel, Madhvi Sharma channel, online teaching and travel vlogs. I hope you are enjoying learning Hindi with me. Yes? Today is class 14 of the educational series Learn Hindi in 21 classes. In this class, we will be going ahead with the tenses. So without wasting any time, let us start. Okay? Yeah, I'll share the document. So friends, welcome to Madhvi Sharma Tutorials Learn Hindi in 21 classes, class 14. In class 12 and 13, we learned making Hindi sentences with pronouns. Yeah, that is Sarvanam. Okay, I gave a list of 50 verbs used in our everyday life in Hindi. Yeah, and I assume by now you already know the verbs and are ready for upgrading your Hindi knowledge. And so now, in this class, we will concentrate on the tenses. Yes. Okay? Future tense, present tense, past tense. Yeah? In Hindi, tenses means kal. Okay? K-A-A-L. Kal. Okay? To learn all the tenses with all the verbs and all the pronouns is not easy. But if you get a knack, okay, then remembering it and actually speaking becomes very easy. So today, in this class, I will be teaching you the knack, okay, how to say any sentences in the past tense, in the present tense, and in the future tense. So let's start. Okay. Past tense. Past tense means bhutkal. Okay. Yesterday. Kal. Yes. Earlier. Pehle. Okay. I hope now you are well versed with the Hindi lipi, the script. Yeah. Kal. Yes. Pahle. Yeah. So yesterday is kal. Earlier is pehle. Present tense is vartaman kal. Vartaman means now, present, yes. So vartaman kal. See, I've written here. Dekhiye. You know what is dekho now. Today, aaj, now, abhi. Future tense is bhavishya. Sha is half. So bhavishya. Bhavishya means future. So a future teller, a person, palmists and all, yeah, they see your bhavishya. Yes. So it is bhavishya kal. Future tense. Tomorrow. Kal. Yes. Yesterday is also kal and tomorrow is also kal. Okay. Another is afterwards. Baad mein. When should I come? Baad mein. Yeah. When your maid tells you, hello madam, now tomorrow when should I come? So you say baad mein. Know these words also. Okay, let's go ahead. Yahan, idhar, yes, means here. Wahan, udhar, there. Use, him, her. Yeah. Uska, his. Uski, her. Yeah. Use kaho, tell him, tell her. Uska, his book. Uski kitab, her book. I hope now you get it. Her is female, so uski, yes. Bhi, also, too. Bhi is usually we add it as a suffix, yes. Okay, like aaj bhi, today also. Aaj bhi, yes. Kuch bhi, anything. Here bhi is not also. Okay, kuch bhi, anything.
So what do you have for dinner? कुछ भी, anything. कुछ नहीं, nothing. कुछ होता है. Something happens. Yeah. Okay. मेरा or मेरी. My or mine, depending where you are using. Yeah. So mera will be used. I think the gender of that noun will decide. Mera, meri. My, mine. He, only you. तुम ही. Yes. क्योंकि तुम ही हो. It's only you. Yes. More words? Okay. Okay, so now we go ahead with the knack part. Okay? Listen to this very carefully. Otherwise, you will not understand and you will get confused. Past tense, bhutkal. Okay? If you noticed, everything is tha, tha, tha. Yeah? Tha, tha, tha. Present tense, vartman kal. Hu, hai. Yeah? Depends. Hai. And future tense, bhavishya kal, ga, something gi. This class 14, okay, I have restricted to the main part, the I part, the first person part, okay. So in this class, we will be doing the tenses, okay, with the first person, I, main, mujhe, maine. We talk about it when I go ahead. So just read with me, okay? मैं था. You don't have to say okay? मैं था. मुझे था. मैंने था. Yes. The present tense. मैं हूँ. The Chandra Bindu हूँ. मुझे है. मैंने है. The future tense, the bhavishya kal. मैं ga. मैं, if it is a female, मैं gi. For example, look is देखना. मैं देखूंगा. मैं देखूंगी. मैं खाऊंगा. मैं खाऊंगी. Now you understand why have I written this? Okay. Let's repeat one more time. मैं था. मुझे था. मैंने था. मैं हूँ. मुझे है. मैंने है. मैं ga. मैं gi. Okay. मुझे, this part, okay, the मुझे part. If you see this, मुझे था, मुझे है. मुझे is usually I want to or I wanted to. Yeah, I wanted to go. मुझे जाना था. We do this, okay? Tense is used with I, मैं. Okay? Let us take an example of to go, which means jana. Yeah? Now read the sentences below in the table. Past tense, bhutkal. मैं गया था. I went. मैं दिल्ली गया था. I went to Delhi. In Hindi, Delhi is called Dilli. Okay? Yes. Present tense for the same. मैं जाता हूँ. I go. Right now. Now, अभी. Yes. मैं जाता हूँ. मैं दिल्ली जाता हूँ. I go to Delhi. Future tense. मैं जाऊंगा. I will go. मैं दिल्ली जाऊंगा. I will go to Delhi. Okay? So it is like this, children. मैं गया था. मैं जाता हूँ. मैं जाऊंगा. मैं दिल्ली गया था. मैं दिल्ली जाता हूँ. मैं दिल्ली जाऊंगा.
Yeah, I hope you all are understanding. Now, another way of saying, मैं जा रहा था. I was going. Yeah, I was going. He just stopped me. I was going. मैं जा रहा था. I am going. मैं जा रहा हूँ. मैं जा रहा होऊंगा. I will be going. It's not much used. Very rarely used. Yeah? We repeat. मैं जा रहा था. मैं बाजार जा रहा था. I was going to the bazaar. मैं जा रहा हूँ. I am going. मैं बाजार जा रहा हूँ. This, let's not do this right now, okay? Now using the has, have and had part. मैं जा चुका था. I had gone. मैं उधर जा चुका था. I had gone there. Remember udhar, there? Yes. You can interchange also. मैं बाजार जा रहा था. मैं उधर जा रहा था. I was going there. Yes. मैं जा चुका था. मैं उधर जा चुका था. मैं जा चुका हूँ. I have gone. मैं जा चुका हूँ. I have gone भाई. I have gone there. मैं जा चुका हूँ. मैं उधर जा चुका हूँ. I have gone there. मैं जा चुका होऊंगा. Not much use. Not much. I will have gone there by tomorrow or something like this you can say. Not much used. Okay? That's why I have made it in red. Now all these sentences are spoken by a boy. It's all raha tha. Yes? Chuka tha, chuka hoon. Now we see this same with another example to see. Okay? Dekhna. मैंने देखा था. Again, see, मैंने था. मैंने उसे देखा था. I saw him or I saw her. मैं देखता हूँ. I see, मैं देखता हूँ. A female will say मैं देखती हूँ. Okay? I think now it is quite okay. So that's why I have not written. मैं फूल देखता हूँ. I see a flower. Flower is fool. Yes, not the English fool. मैं देखूंगा. I will see. If you see, the k has a dot. So it is मैं देखूंगा. Ga. Correct. मैं घर देखूंगा. I will see house. Yes, I will see the house. घर is house. Let's repeat. मैंने देखा था. मैंने उसे देखा था. मैं देखता हूँ. मैं फूल देखता हूँ. मैं देखूंगा. मैं घर देखूंगा. Let's go with the continuous part. मैं देख रहा था. मैं घर देख रहा था. मैं देख रहा हूँ. I am seeing. मैं बाजार देख रहा हूँ. I am seeing the bazaar right now. Let's not read this. मैं देखूंगा. मैं देखूंगी. मैंने देखा था. I had seen. मैंने वह अस्पताल देखा था. I had seen that hospital. Yeah? मैंने देखा है. I have seen. Have you seen the movie? Yes. मैंने देखी है. मैंने देखा है. मैंने वह गांव देखा है. Okay? मैंने वह गांव. Yes, village. Yeah? I have seen that village. मैं देख चुका होऊंगा. I will have seen that. Okay? All right. Remember, a female says देखती or देखूंगी. Now let us see a few more examples in different verbs of Hindi with a female talking. Okay? Past tense भूतकाल, present tense वर्तमान काल, future tense भविष्य काल. मैंने खाया. Now I am a female, so I will say मैंने खाया. मैंने खाना खाया. I will not read the English part now, okay?
You read it in your mind. मैंने खाया, मैंने खाना खाया, और मैंने खाना खा लिया. Okay? मैं खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ. मैं खाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी. नेक्स्ट, मैं खा रही थी. यस, मैं खाना खा रही थी. मैं खा रही हूँ, अभी अभी खा रही हूँ. मैं खाना खा रही हूँ. क्या कर रही हो? What are you doing? मैं खाना खा रही हूँ. मैंने खाया था. I had eaten. I had eaten a samosa. मैंने समोसा खाया था. मैंने वह बर्गर खाया था. मैंने खाया है. I have eaten. मैंने खाया है. मैंने वह बर्गर खाया है. So now let us go ahead. Henceforth, we will not write the red sentences. So for the future tense, we will use only one type nouns and get used to this. Tha, thi for past tense. Hu, hai for present tense. Da 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 ga, da 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 gi for future tense. Now for this, we will read 26 verbs that we did in the previous class. Out of the 50 verbs, yes, I will be redoing the 26 verbs. It will be a good revision, although there are some variations when used in the sentences. But this will definitely make you confident, yes. So, let us start reading them aloud. Dekhna, to look, to see. Dekha tha, देखी थी. Yes, देखी थी also we can say. देखता हूँ, देखा है, देखी है. देखूंगा for a male, देखूंगी is for a female. आना, to come. आया था, आई थी. आया हूँ, आई हूँ. आऊंगा, आऊंगी. Jana, to go. Gaya tha. Now it is not jana tha. It is gaya tha. Like how we have went for go, it's went. Same way in Hindi also for jana, the past tense is gaya. Yes. मैं गया था, a male says. मैं गई थी, a female says. I went. जाता हूँ, जाती हूँ, present. जाऊंगा, जाऊंगी, the future. खाना, to eat. खाया था, खाई थी. खाता हूँ, खाती हूँ. खाऊंगा, खाऊंगी. I hope now it has become easy, yeah? You have to use the thas with the past tense, or the these, depending on the male or the female. Who or hai, okay, in the present tense, and the ga is the future tense. Peena, to drink. Piya tha, okay, pi thi, not good. Piya tha, okay. Pita hu, piti hu. Piyunga, piyungi. उठना, to get up. उठता था, उठती थी. उठता हूँ, उठती हूँ. उठूंगा, उठूंगी. मैं उठूंगा, just add the मैं in front, okay? And you will get the sentences. बैठना, to sit. बैठता था, बैठती थी. बैठता हूँ, बैठती हूँ. बैठूंगा, बैठूंगी. The 8th one. खड़े रहना, to stand. Yeah? खड़ा था, खड़ी थी. खड़ा हूँ, खड़ी हूँ. खड़ा रहूंगा,
खड़ी रहूंगी. Yes, see, to stand. सोना, to sleep. Of course, it also means gold. सो गया था, सो गई थी, और सोया था, सोई थी. Yeah, like how we say गया था, गई थी, same way सोया था, सोई थी, और सो गया था, सो गई थी. Yeah, see? Yes. Here, सो जाता हूँ, सो जाती हूँ. Like when I have to say, I will say सो जाती हूँ. But if Ram has to say or Rahul has to say, he will say सो जाता हूँ, और सोता हूँ, और I will say सोती हूँ. सो जाऊंगा, सो जाऊंगी. Yeah? Oh, okay, let's go ahead. जागना, to awaken. जगा हुआ था. It's not जागा. I think I have heard this. Okay, while talking we also say जागा हुआ था. But usually the correct Hindi is जगा हुआ था, जगी हुई थी. जगा हुआ हूँ, जगी हुई हूँ. जागूंगा और जागूंगी. Okay? All right. I hope it is quite clear now. By now, the second sentences are spoken by a female and the first one are by the male. करना, to do. करता था, करती थी. करता हूँ, करती हूँ. करूँगा, करूँगी. काम करना, to work. काम करता था, काम करती थी. काम करता हूँ, काम करती हूँ. काम करूँगा, काम करूँगी. See? करूँगी. The Chandra Bindu. Let's go ahead. The 13th one. खत्म करना और खत्म करना. Okay, it is to finish. Sometimes we also say पूरा करना. पूरा करना, पूरा is complete. Yes. So to finish, to complete. Yes, we also say पूरा करना. खत्म किया, पूरा किया. Whenever there is किया, okay, we use this word मैंने. मैंने खत्म किया, मैंने पूरा किया. मैं खत्म करता हूँ, मैं खत्म करती हूँ. मैं पूरा करता हूँ, मैं पूरा करती हूँ. मैं खत्म करूँगा, मैं खत्म करूँगी. मैं पूरा करूँगा, मैं पूरा करूँगी. Only in the past tense we use मैंने खत्म किया, मैंने पूरा किया. पढ़ना, yeah, to read, to study. So now if you see, padhna is to read and to study also. Same way here also there is a slight variation. मैं पढ़ता था, मैं पढ़ती थी. मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था. I have read. Yes. मैं पाठशाला में पढ़ता था, उस पाठशाला में पढ़ता था. I studied in that school. मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ. हाँ, okay, I made a mistake. I'll correct it. Okay, it's पढ़ती थी. Oh, here also it is पढ़ता. मैंने पढ़ा है. हाँ, था, है. मैंने पढ़ा है. I have read it. Yes, I have read that news. मैंने पढ़ा है. पढ़ूंगा, पढ़ूंगी. I will read, I will study. लिखना, the 15th one, लिखना, to write. लिखता था, लिखती थी. लिखा था, मैंने लिखा था. लिखता हूँ, लिखती हूँ. लिखा है. जी है. लिखूंगा, लिखूंगी. मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगी. मैंने लिखा है, मैं लिखती हूँ.
मैं लिखती थी. Get used to the thas, the has, the these, the whose, the geese, the gas. Yes. Number 16, सोचना, to think. मैंने सोचा था, मैं सोचता था, मैं सोचती थी. मैंने सोचा है, मैं सोचता हूँ, मैं सोचती हूँ. मैं सोचूंगा, मैं सोचूंगी. I'll think, मैं सोचूंगी. सोचूंगी. Number 17, कहना. Okay, कहना, to say, to tell. मैंने कहा था ना, मैंने कहा था. Yes, I told you. कहता हूँ, कहती हूँ. कहूंगा, मैं कहूंगा और मैं कहूंगी. मैं कहती हूँ. I am telling you now. The 18th one, बोलना, to speak. Remember, this is कहना, to say, to tell. But when you want someone to speak, अरे बोल, बोल, बोल. Yes, not ball, okay? It's a narrow one. बोल, yes. बोल also means words, okay? बोल हल्के हल्के. Yeah, light words. बोलना, to speak. बोला था, मैंने बोला था. मैं बोलता हूँ, मैं बोलती हूँ. मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी. सुनना, to hear, to listen. मैंने सुना था, मैं सुनता हूँ, मैं सुनती हूँ. If you have noticed, the ta parts, whenever the tas or the tees come, you don't say मैंने. But if it is only the word, then we use मैंने. Yeah? मैं सुनता हूँ, मैं सुनती हूँ. मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगी. See, this is not late. The ta is not there. So it will be मैंने लिया था. लेना, लेना, to take. मैंने लिया था. मैं लेता हूँ, मैं लेती हूँ. I am taking. मैं लेती हूँ. लूंगा, I will take. हाँ, I will take. लूंगी, I will take. नहीं लूंगी, I will not take. देना, to give. दिया था, मैंने दिया था. Yes, I gave. देता हूँ, देती हूँ. मैं देता हूँ, मैं देती हूँ. I give. दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगी. It has a dot over it, so it has that little nasal tone. मैं दूंगा, मैं दूंगी. Let's go ahead. So these were the 26 verbs, yeah? Practice sentences, okay? मैंने कल खाना खाया था. मैं आज खाना खाता हूँ. मैं कल खाना खाऊंगा. I ate yesterday. I eat today. I will eat tomorrow. मैंने कल खाना खाया था. मैं आज खाना खाता हूँ. मैं कल खाना खाऊंगा. मैंने तुम्हें किताब दी थी. I gave you the book. मैंने तुम्हें किताब दी थी. मैंने तुम्हें कंप्यूटर दिया था. कल मैं पिकनिक जाऊंगी. Tomorrow I will go for picnic. Or I will go to some place, any place. जाऊंगी, will go. Picnic, कल, tomorrow. Here, kal and jaungi will decide tomorrow because kal also means past. Okay? If you see this, kal tha and kal is ga. Yes. All right, let's go ahead. मैंने यह गाना सुना है. Present tense. Yeah? I have heard this song.
मैं वह गाना कल सुनूंगा. सुनूंगा. Yes. I will listen to that song. वह गाना, that song, कल, tomorrow, कल. मैं वह गाना कल सुनूंगा. मैं सोचता हूं कल पाठशाला जाऊंगा. I think, मैं सोचता हूं कल, tomorrow, I will go to school. पाठशाला जाऊंगा. मैं पाठशाला जाऊंगा. You can say that also. मैं बाद में कॉफी पीऊंगी. हाँ, मैं बाद में कॉफी पीऊंगी. I will drink coffee later on. बाद में, later on or afterwards. ठीक है. मुझे पढ़ना है. I want to study. Remember I said whenever मुझे, it is usually I want to. मुझे पढ़ना है. I want to study. मुझे पढ़ना था. I wanted to study. मैं जाग रही हूं और जग रही हूं. I am awake. ठीक है, मैं बैठती हूं. Okay, I sit. Conclusions. In Hindi, there are different ways of speaking in the three tenses. Do the following table extremely well and fit in the verbs in between. You will get the sentences correctly with time and practice. Past tense भूतकाल, present tense वर्तमान काल, future tense भविष्य काल. मैं था, मुझे था, मैंने था. मैं हूं, मुझे है, मैंने है. मैं गा, मैं गी. And now it is for some shlok practice. Okay, one of my favorite shlok. Again, this is a prelude to a very famous song in Hindi. Okay, it's about God. ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है. जागो, उठकर देखो. All this is in present tense. Yes, I repeat. ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है. जागो, उठकर देखो. जीवन ज्योत उजागर है. सत्यम शिवम सुंदरम. Yes? Now let's see the meaning part. God is truth. Yeah? ईश्वर सत्य है. Truth is only Shiva. सत्य ही शिव है. You can also change it and say Shiva is the only truth. सत्य ही शिव है. He, yes, only. Remember? Only Shiva is beautiful. Yes, शिव ही सुंदर है. सुंदर, beautiful. जागो, wake up. उठकर देखो, wake up and look. Yeah? जागो, उठकर देखो, wake up and look. जीवन ज्योत उजागर है. The light of life. जीवन ज्योत. ज्योत is light. जीवन is life. जीवन ज्योत उजागर है. The light of life is alive. सत्यम शिवम सुंदरम. सत्यम, truth. Shivam, truth is Shiva. Sundaram, truth is beautiful. Truth, godliness, beauty. Let's repeat.
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है, जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम। So friends, hope this class has helped you in understanding the tenses in Hindi, of course in first person. We will be doing more sentences with other pronouns like hum, tum, aap, tu, veh, and some more names in the third person in the next class, that is class 15. Do visit my website for all the PDFs. My website. See you all in the next class. Until then, happy Hindi learning. Jai Hind.